Hello everyone, welcome to Quantifier. So students, today I have taken a very good question based on time, speed and distance. So let us discuss that. Uh, Before that, students, if anyone wants to enroll for any of our courses, you can visit our website www.quantifiers.in. We also have a Facebook group, guys. Regular questions are being posted here for your practice. You can join this group. A link for this group is given in the description. Now, those who have not tried this question, I would request to please pause the video and try this question. Okay, so I hope all of you have tried it. See, the most important thing in this type of question is how to find the length of the track. So that is the first step. कि ट्रैक की क्या लेंथ है या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, हमें ये निकालना आना चाहिए. सो नाउ लेट मी टेल यू दैट. सी, if we talk about the first meeting is 500 meters away from A. So let's say this is 500 meters. And from here, Ajay is starting. And from point B, Vijay is starting. Now you can see till the first meeting. Can I say Ajay is covering this much? And remaining distance is covered by Vijay. अब देखो दोनों ने मिलके कितना कवर किया है. दोनों ने मिलके पूरा डिस्टेंस ए बी कवर किया है. So I'm assuming distance between A and B, distance between A and B, I'm assuming it to be D. Now can I say together when they cover D, together they are covering D, है ना, दोनों ने मिलके पूरा ट्रैक कवर किया till the first meeting. So when together they are covering D, Ajay is covering how much? उसमें अजय का शेयर कितना है? Ajay covers 500. Now let's look at the second scenario. See, this diagram I am making just to explain you the concept. Otherwise, no need to make diagrams. Now, point A, point B, Ajay starting from point A, Vijay starting from point B. And now, if we talk about the second meeting, right? This is the first meeting. This is the second meeting. Right? Now you can see second meeting is what? 300 meters from B. Second meeting is 300 meters from B. Now, I'm talking from the beginning till the second meeting, right? I'm talking about from the beginning till the second meeting. Now, from the beginning till the second meeting, can I say Ajay has covered this much complete track and this remaining distance 300. यही distance तो है ना जो अजय ने cover किया है from the beginning till the second meeting. And can I say Vijay has covered complete track and this remaining distance? So I hope all of you can visualize it. अब देखो यहां से क्या पता लग रहा है. We can say that from the beginning till the second meeting, together they are covering 3 times the total distance. 3 times the total distance देखो कैसे आ रहा है. यहां से लेकर यहां तक ये D हो गया. ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक ये भी D हो गया. And now look at the remaining distance which I am highlighting with black color. Can I say this remaining distance is also equal to D? Right? So from here, what can I say? I can say that when together they are covering 3D, right? Together they are covering 3D from the beginning till the second meeting. दोनों ने मिलके कितना कवर किया? 3D कवर किया. Now see, when together they cover D, जब D कवर करते हैं तो अजय का शेयर कितना है? 500. तो अगर 3D कवर करेंगे, now if they cover 3D, so Ajay must have traveled 3 times. तो अजय ने कितना कवर किया होगा? 500 into 3, applying unitary method. So we can say from the beginning till the second meeting, Ajay must have covered 1500. ठीक है. अब ध्यान से देखो अजय ने कितना कवर किया है. अजय ने यहां से लेकर यहां तक कवर किया, which is what? Which is equal to length of the track. And Ajay is also covering this 300. अजय ने पूरी लेंथ कवर करी और ये 300 भी कवर किया. तो अजय ने एक्चुअल में कितना कवर किया? अजय का शेयर है D plus 300. राइट, D plus 300 किसका शेयर है? अजय का शेयर है. कहने से दिस हैज टू बी इक्वल टू 1500. दिस हैज टू बी इक्वल टू 1500. तो देखो इससे हमें क्या पता लग गया? इससे हमें एक चीज पता लगी कि लेंथ ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू 1200. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
because see, sometimes there is a question directly, they will ask you the length of the track. So then answer will be 1200. Now from here, what can we know? From here, we can figure out very important thing, that just look at the first meeting. Till the first meeting, Ajay was covering how much? Ajay was covering how much? Ajay was covering 500. So obviously, Vijay must have covered how much? Vijay must have covered 700, because obviously length of the track is 1200. तो अगर अजय ने 500 किया होगा तो विजय ने 700 किया होगा. Now from here, what do we know now? When Ajay covers 500, विजय कितना करता है? 700 करता है. अब इससे देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लग रही है, that ratio of their speeds is 5:7. Okay, ratio of their speeds is 5:7. So they could have also asked you find the ratio of their speeds. तो हम वो भी निकाल सकते हैं कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या है? 5:7. Now coming to the question is calculate the distance of their third meeting from point A. हमें थर्ड मीटिंग पॉइंट ए से निकालनी है. अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, कोई पैटर्न बता रहा हूं. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सी द पैटर्न हियर. सी यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड till the first meeting. Let me write it here. Till the first meeting, they are covering how much? Together they are covering D, right? Together they are covering D. Now till the second meeting, from the beginning till the second meeting, they are covering how much? They are covering 3 times the total distance. अभी मैंने आपको करके दिखाया है. Now students, you just need to understand, first meeting will occur after D, and students after that, after the first meeting, okay, after the first meeting, for every next meeting, they have to travel 2D more. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. मतलब कि पहला फर्स्ट मीटिंग के लिए उन्होंने डी ट्रेवल किया, सेकेंड मीटिंग के लिए कितना करना पड़ेगा? डी प्लस 2D. फॉर एवरी मीटिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 2D. So till second meeting they will travel 3D. And similarly, if we talk about third meeting, now again students, they have to travel 2D more, right? So after second meeting till the third meeting, they have to travel 2D more. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? till third meeting they must have traveled 5D. ठीक है. तो अगर मैं फोर्थ मीटिंग की बात करूं तो क्या हो जाएगा? फोर्थ मीटिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन आफ्टर दिस दे हैव टू ट्रेवल 2D मोर. दैट मींस टिल फोर्थ मीटिंग दे मस्ट हैव ट्रेवल्ड 7D. तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दैट फॉर एवरी मीटिंग दे हैव टू ट्रेवल 2D एक्स्ट्रा. नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ओवर. आवर फोकस इज ऑन द थर्ड मीटिंग, राइट? सो टिल थर्ड मीटिंग दे आर ट्रेवलिंग हाउ मच? दे आर कवरिंग 5D टुगेदर. दोनों ने मिलके 5D कवर किया. अभी 5D का मतलब क्या हुआ? 5D का मतलब हुआ कि डिस्टेंस इज 1200. तो 5D का मतलब क्या हुआ? 5 into 1200 दैट इज 6000. इसका मतलब है टिल थर्ड मीटिंग टुगेदर दे आर कवरिंग 6000. ये 6000 क्या किया? दोनों ने मिलके कवर किया. तो अगर दोनों ने मिलके 6000 कवर किया है तो हम दोनों का शेयर निकाल सकते हैं. बट for this question, let us try to find out any one value. So if I want to find the value of Ajay, so can I say Ajay must have covered 5 out of 12? Ajay must have covered 5 out of 12 into 6000. तो इसका मतलब क्या हो गया? अजय ने कितना ट्रैवल किया है? अजय ने टोटल कितना ट्रैवल किया होगा? अजय ने टोटल ट्रैवल किया 2500. Now this is the distance he is traveling till the third meeting. Okay, till the third meeting. तो आई होप अब आप लोग निकाल सकते हो. हमें क्या निकालना है? थर्ड मीटिंग फ्रॉम पॉइंट ए. नाउ वी नो दैट लेंथ ऑफ द ट्रैक, is 1200. Length of the track is 1200. So Ajay is starting from point A. So 2500 टोटल ट्रैवल किया है ना, तो 1200 फ्रॉम A to B हो जाएगा. 1200 from A to B. Then again 1200 from B to A. So 2400 तो ये हो गया. Now he is traveling 100 more. Okay, he has to travel 100 more. So this will be, let's say, 100 now. So what will be the answer?
that now the third meeting will occur 100 meters from A. Okay, 100 meters from A. So this is the answer. So very important concept. I hope all of you have understood it, right, students? So thank you, everyone.